Hello students, now I am going to continue the chapter Application of Derivative of 12th Standard, Exercise 2.1, question number 4. So find the equation of the tangent to the curve x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equals to 0, which are parallel to the x-axis. So see, we have to find out the equation of tangent, and the equation of the curve is x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1, and these are parallel to the x-axis. So here we are going to draw the x-axis and y-axis. So this one is y-axis and x-axis. So यहाँ पे जो दोनों tangents है, so these are parallel to the x-axis. So यहाँ पे मैंने एक tangent draw की है, यहाँ पे भी एक tangent है, and these are the points through which this tangent touches the curve, and this one is the curve. The equation of the curve is given here, that is x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equals to 0. So you already know that is the slope of the x-axis is always a 0, and since these two tangents are parallel to the x-axis, their slopes are also 0, because you know that is the slopes of the parallel lines are same. So अगर ये दोनों टेंजेंट्स एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो उनका भी स्लोप क्या हुआ, 0 ही हुआ. सो सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस एग्जांपल. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, ये जो टेंजेंट्स है उन दोनों का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. तो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस दैट इज यू ऑलरेडी नो दैट इज इट इज़ 0. इसके लिए हम m1 बोलेंगे. सो m1 इज इक्वल्स टू 0, एंड द स्लोप ऑफ द पैरेलल टेंजेंट्स टू द एक्स एक्सिस, मतलब जो ये दोनों टेंजेंट्स एक्स एक्सिस को पैरेलल है उनका भी स्लोप क्या है, 0 है. दोनों के लिए मैंने स्लोप के लिए m2 बोला है. नेक्स्ट वन, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, सो दैट वन इज हियर. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद दिस equation. After differentiating we get the slope of the tangent. Remember this one, whenever you differentiate the equation of the curve you will get the equation of the tangent. You get the slope of the tangent. So x square plus y square minus 2x minus 4y plus 1 is equals to 0. Differentiating with respect to x we will get 2x plus 2y dy by dx minus 2 minus 4 y का डेरिवेटिव हुआ dy by dx and 1 का हुआ 0 is equals to 0. So there are two terms of dy by dx, so we are taking it common. In bracket we will get 2y minus 4 is equals to this minus 2 become plus 2 and this plus 2x becomes minus 2x. So dy by dx is equals to 2 minus 2x upon 2y minus 4. So we taking common as a 2, so 2 will get cancelled. In bracket 1 minus x upon y minus 2, and this is nothing but the slope of the tangent, that is m2. तो आप सबको ये पता है क्योंकि अभी पहले जो हमने एग्जांपल देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो in all these examples we see that is if we find out the derivative of the equation of the curve we get the slope of the tangent. But in this example we have already find out the slope of the tangent. So see, it is nothing but the 0. The slope of the tangent is 0. So we are putting this value here. So 1 minus x upon y minus 2 is equals to 0. कहाँ से आई ये 0? यहाँ से, slope of the tangents. So we moving this y minus 2 to this side, so it becomes 0. So 1 minus x is equals to 0. So we get x is equals to 1. Now putting this value of x is equals to 1 in the equation of the curve, we get the value of y. तो कर्व का इक्वेशन हमें जो दिया था वहाँ पे वो हम फिर से यहाँ से ले लेंगे, एंड वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ x एज अ 1. सो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ y, दैट इज y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, y इंटू ब्रैकेट y माइनस 4. सो y इज आइदर 0 और y minus 4 is 0. So we get the two values of y, that is y is equals to 0 or y is equals to 4. And so the points are, so when 1 अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू 0 भी आ सकती है, और x अगर 1 होता तो y की वैल्यू 4 भी होती है. So the equation of the tangents parallel to the x axis, since it is parallel to the x axis, so it is in the form of y. So y is equals to 0 and y is equals to 4. So these are the equation of the tangent.
So the line which is parallel to the x-axis is always in terms of the y. Now see the example number next, that is question number 5. Find the equation of the normals to the curve 3x square minus y square is equals to 8 which are parallel to the line x plus 3y is equals to 4. So यहाँ पे जो कर्व है उसके ये टेंजेंट है और ये मैंने उसके नॉर्मल्स भी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं. तो इक्वेशन ऑफ द कर्व हमें दिया गया है, दैट इज 3x square minus y square is equals to 8. So after differentiating we get the slope of the tangent. So differentiating with respect to x, so we'll get 3 2s are 6x minus 2y divided by dx is equals to 0. The equation of the the derivative of the constant is 0. So minus 2y divided by dx is equals to minus 6x. दोनों साइड पे माइनस है तो प्लस होगा. सो डिवाइड बाई डिक्स इज इक्वल्स टू 6x अपॉन 2y. वी मूविंग दिस 2y टू दिस साइड. सो 2 3s are 6. सो यहाँ पे हमें मिला 3x अपॉन y and that is nothing but the slope of the tangent. So whenever we take the derivative of the equation of the curve we get the slope of the tangent. So slope of the tangent is 3x upon y. So you know that is the tangents and the normals they are perpendicular to each other. So अगर हमें स्लोप पता है टेंजेंट का तो नॉर्मल का स्लोप हम उसका माइनस इन्वर्स लेके पता करते हैं. सो इसका माइनस इन्वर्स क्या होगा, माइनस y अपॉन 3x. सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज माइनस y अपॉन 3x. सो गिवन लाइन इज, सो हमें जो इक्वेशन लाइन का दिया गया है एग्जाम्पल में, सी द एग्जाम्पल दैट इज पैरेलल टू द लाइन x plus 3y is equals to 4. So we writing the equation of the given line. So given line is x plus 3y is equals to 4. इसका स्लोप हम पता कर सकते हैं by using the formula that is minus a upon b. So the slope of the given line is minus a upon 3, minus 1 upon 3. यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है 1 है. तो by this formula ax plus by plus c is equals to 0. So minus 1 upon 3 is the slope of the line. So the slope of the normal is equals to the slope of the parallel line. So this one is the formula, that is slope of the normal line is equals to the slope of the parallel line. So यहाँ पे minus y upon 3x हमने slope of the normal find out किया था and the slope of the line is minus 1 by 3. तो ये दोनों slope जो है वो हमने equal दिखाए. तो यहाँ पे हमें जो equation मिला solve करके वो है minus y upon x is equals to minus 1. So x will go to this side, so we'll get here y is equals to x, मतलब x is equals to y. तो ये जो वैल्यू है that is y is equals to x we put in the equation of the curve. So 3x square minus y square is equals to 8. 3x square minus x square is equals to 8. We putting the value of y as x. So 3x square is equals to 3 minus 1, that is 2x square is equals to 8. So x square is equals to 4. So x is equals to plus minus 2. So if x is equals to 2 then y is equals to also 2, because y is equals to x. जो भी x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी. And if x is equals to minus 2, y is equals to minus 2. So the coordinates of the points are 2 2 or minus 2 minus 2. So equation of the normal we are going to find out by slope point form. So you know the formula. So y minus y1 is equals to m into bracket x minus x1. तो हमारे पास दो पॉइंट है, वो दोनों पॉइंट लेके हम दो इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट वी टेकिंग द पॉइंट दैट इज 2 2. तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू 2 2 पुट करेंगे. y माइनस 2, y1 इज 2 एंड स्लोप हमने ऑलरेडी पहले ही फाइंड आउट किया था. तो स्लोप है माइनस 1 by 3. So x minus 2 so by removing this 3 we move this 3 to this side. 3y minus 6 minus x plus 2. So move all quantities to left side, so we'll get x plus 3y minus 8 is equals to 0. Similarly by taking the point minus 2 we're going to find out the equation. So again the same slope point form equation, and by putting the value that is minus 2 minus 2,
तो यहाँ पे वो प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा. सो 3y प्लस 6, मूविंग दिस 3 टू दिस साइड, माइनस एक्स एंड माइनस 2. तो फाइनल इक्वेशन हमें मिला x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. Now see the example number 6. So if the line y is equals to 4x minus 9 touches the curve y square is equals to x cube plus b at the point 2 and 3, then find a and b. So see what you are given. If the line y is equals to 4x minus 3 touches the curve, मतलब ये जो लाइन है वो कर्व को टच करती है. सो इट इज and the equation of the curve you have given, that is y square is equals to ax cube plus b at the point 2 3. सॉरी यहाँ पे जो इक्वेशन है वो 5 है, यहाँ पे इट्स नॉट 9 इट्स 5. तो सी लाइन, ये जो लाइन है y is equals to 4x minus 3, it touches the curve. So I draw here this line, and at which point, that is 2 3, and this is the equation of the curve, that is y square is equals to x cube plus b. Now we have to find out these values of a and b. So see, equation of the given line. So this line is nothing but the tangent. So y is equals to 4x minus 5. That is we convert this into our regular form, that is 4x, we moving this y to this side, and minus 5 is equals to 0. Now we are going to find out the slope of the tangent by using the formula minus a upon b. So यहाँ पे minus 4 upon minus 1, so the answer is 4. So this is first point. Now equation of the curve we are going to write here, that is y square is equals to x cube plus b. After differentiating with respect to x we get the slope of the tangent. तो यहाँ पे हमने पहले भी एक फाइंड आउट करके रखा है, इसका जो स्लोप हमें मिलेगा वो और ये हम इक्वेट करेंगे. So differentiating with respect to x will get 2y divided by dx is equals to a as it is. x cube का जो डेरिवेटिव है वो 3x square plus 0. So 2y divided by dx is equals to 3ax square. So divide by dx at point, तो हमें point दिया है 2 3. So 2 3 3ax square upon 2y. Now we putting the value of x as a 2 and y as a 3. So after putting and solving this we get here 2a. So 2a is nothing but the slope of the tangent. So see equation 1 and 2. यहाँ पे भी हमने slope of tangent find out किया है, और यहाँ पे भी हमने slope of tangent find out किया है. So equating both these equations, so we get from 1 and 2, that is 4 is equals to 2a, that is a is equals to 2. Now we are going to put down this value of a is equals to 2 in the equation of the curve. So y square is equals to ax cube plus b is the equation of the curve. Now put the value so y, so point is 2 and 3, so we putting the value of x as a 2 and y as a 3. So 3 square is equals to 2 into 2 cube plus b, and so 9 is equals to 16 plus b, so b is equals to 9 minus 16, so b is equals to minus 7. तो यहाँ पे हमें एक की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की है, दैट इज 2 एंड b इज minus 7. So my answer is a is equals to 2 and b is equals to minus 7. Now see the question number 7. A particle moves along the curve. So this type of example always asked in the exam. So see carefully. A particle moves along the curve 6y is equals to, in your textbook there is x square, but it is a printing mistake. So change in your textbook, that is this is nothing but the x cube. So 6y is equals to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. तो यहाँ पे सिर्फ आपको जो कर्व का इक्वेशन है उसका इक्वेशन आपके टेक्स्ट बुक में चेंज करना है. 6y is equals to x cube plus 2. So read the example carefully. यहाँ पे y coordinate change हो रहा है as 8 times the x coordinate. Now see how to solve this type of example. तो हमें दिया है that is कौन change हो रहा है तो y change हो रहा है. So the rate of change of y with respect to x is given by like this way, that is dy by dx is equals to 8. कैसे change हो रहा है वो 8 times से change हो रहा है. See the sentence again. So y coordinate is changing 8 times as fast as the
x coordinate. So there is a change in y coordinate with respect to x, and कितने टाइम्स से हो रहा है वो 8 टाइम्स. So हम ये जो मैंने लिखा है वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, that is y coordinate is changing 8 times the x coordinate. So y is equals to 8x, and after that we taking the derivative of this one, so we will get here dy by dx is equals to 8. By this way also we can calculate this equation. अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करके भी डेरिवेटिव लेके भी हम ये सॉल्व कर सकते हो. आफ्टर दैट द पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, मतलब ये जो कर्व हमें दिया गया है उसका इक्वेशन है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2. वो जो पार्टिकल है वो इस कर्व पे मूव हो रहा है. सो वी गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, दैट इज 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2. आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल गेट हियर 6 dy बाय dx प्लस 3. मैंने ये बाद में चेंज किया है थोड़ा सा, क्योंकि पहले भी मैंने एक्स स्क्वायर ही लेके सॉल्व किया था, बट द आंसर इज़ नॉट कमिंग. सो आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू चेंज दिस एग्जाम्पल. सो इट इज़ एक्स क्यूब, so 3x square it is. So we're taking the derivative of this one, so 3x square, and the derivative of 2 is 0. So dy by dx is equals to 3x square. Moving this 6 to this side, so we'll get 3 2s are 6, so we get here x square upon 2. So dy by dx is equals to x square upon 2. This is my equation second, and this x square upon 2 is nothing but the slope of the tangent जो मैंने पहले भी किया था. तो ये जो वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2. ये जो dy बाय dx है वो dy बाय dx हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया था. सो dy बाय dx के दोनों वैल्यू जो है हम इक्वेट करेंगे, since the left sides are same, right sides are also same. So x square upon 2 is equals to 8. So moving this 2 to this side, we'll get x square is equals to 16. So x is equals to plus minus 4. Now from the equation of the curve, that is, what is the equation of the curve? 6y is equals to x cube plus 2. Now we putting the value, we have two values of x, that is plus 4 and minus 4. So first we putting the x is equals to 4, what we get? So 6y is equals to 4 cube plus 2. So 4 cube is 64. So 6y is equals to 64 plus 2. 6y is equals to 66. So y is equals to 11. So here we get the y is equals to 11. Means अगर x 4 होगा तो y कितना होगा? 11 होगा. And after that I am going to take the value of x as a minus 4. So 6y is equals to x cube plus 2. So 6y is equals to minus 4 bracket cube plus 2. So 6y is equals to minus 64 plus 2. So 6y is equals to minus 62. So y is equals to after dividing this we'll get minus 31 upon 3. So the required point on the curve, so यहाँ पे जो point है वो minus 4 and minus 31 upon 3. So the required point on the curve is either 4 11 or minus 4 and minus 31 upon 3. Now see the next example, that is question number 8. A spherical soap bubble is expanding so that its radius is changing. Just radius is increasing. Increasing मतलब radius is changing. तो जो चेंज हो रहा है, एग्जाम्पल जब आप रीड करते हो, जो चेंज हो रहा है उसे आप अंडरलाइन कर दो, जो कि हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी जाता है. सो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम. सो दैट इट्स रेडियस इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 0.0 centimeter per second. At what rate is the surface area is increasing when its radius is 5 centimeter. तो ये जो सोप बबल हमें दिया है विच इज़ स्फेरिकल इन शेप, यहाँ पे हमें बोला गया है कि दैट इज़ द रेडियस इज इंक्रीजिंग. सो रेडियस इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड द रेट ऑफ whenever you are given that is rate of, मतलब हमें टाइम दिया गया है. सो यहाँ पे रेडियस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो सी मैंने कैसे लिखा है, रेडियस इज चेंजिंग और इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो रेट मतलब हमें टाइम दिया है. सो dr by dt is equals to 0.02 centimeter per second, and also we have given the radius. So radius is 5 centimeter. So जो भी given है example में वो मैंने लिखा है. Now what we have to find out? So we have to find out that is what is the rate. So at what rate is the surface area increasing? Surface area के लिए हम s ये लेटर लेते हैं. तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब सरफेस एरिया चेंज हो रहा है
एट वॉट रेट, मतलब हमें अगेन क्या फाइंड आउट करना है, ds/dt, मतलब सरफेस एरिया चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द चेंज इन सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So in 9th standard or 10th standard we already learn about the formula of surface area of sphere, which is nothing but the 4 pi r square. So S is equals to 4 pi r square, differentiating with respect to t. So यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें with respect to t करना है. So ds/dt, so 4 pi is constant, the derivative of r square is 2r. Since we are differentiating with respect to t, the derivative of r is dr/dt. Now 4 pi is as it is, 2 as it is, we already know the value of r, so the r is 5 centimeter, and also the value of dr/dt we already given in the example, that is 0.02. so we are putting this value here, and after multiplication we get here that is ds/dt is equals to 0.080 pi, or we can also write like this way, that is 0.8 pi centimeter square per second. We have to also write down the unit also. So this is all about the question number 8, up to 8 examples of exercise 2.1. The remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.